पहले सुनना है। ये है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। No child below the age of 14 years shall be employed to work any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. तो राइट जो है वो हैजार्डुअस एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें, वो भी कोई खास अभी न्यूज में नहीं है। एक ILO का कन्वेंशन है ऑन चाइल्ड लेबर, and by which India has committed that we will be abolishing child labor by 2025. Then there is also a concern in SDG goal that also have to be achieved by 2025 and 2030. But we are nowhere near to this. Next, on the status of the child rights, there is a report of a parliamentary committee, and this committee has said there are a lot of problems in the way laws are framed. Now, what is the biggest problem? Under different laws and under different schemes, the definition of child vary, and there are lot of you can say confusions among the law. For example, under POXCO Act, sexual offense or all these things against child is a cognizable offense, but under Juvenile Justice Act it is not a cognizable offense. Means the debate is there is a need to reform the laws. And then regarding the child, you have National Commission for Protection of Child Rights. Fine. तो अभी it is not in news, nothing much to do. ठीक है, तो now let us write that. तो point number 1 you can write that Government of India has brought Child Labor Prohibition Act 1986 amended in 2016 as Child and Adolescents Labor Protection Act. तो इसमें क्या चेंज किया गया है? एडोलसेंट को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब है पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 24 टू बी स्टडीड along with Article 21A, right to education, 39E, 39E का कंटेंट लिख लो। 39E कहता है कि आउट ऑफ इकोनॉमिक, पहले सुन लो, आउट ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी somebody should not be forced to work beyond their capacity. फिर 39F है which says that it is a state's responsibility to protect child and youth against the material abandonment. ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन इनसे लिंक करके फ्रेम कर सकते हैं, तो इसलिए 39A 39E लिखो, राइट। State has to ensure that men, women and children of tender age are not abused
and forced by economic necessity to enter into vocations unsuited to their age. और 39F 39F आया था 42nd अमेंडमेंट से। ये है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ अगेंस्ट moral and material abandonment. Material abandonment. फिर इसको और भी हम लिंक कर सकते हैं आर्टिकल 41 से। ये काफी प्रीलिम्स में आता है। आर्टिकल 41 है पब्लिक असिस्टेंस, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। फिर आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर। एक ऐसे नोट करके लिख लो जरा। एक था आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार से रिलेटेड। इससे रिलेटेड डीपीएसपी कौन? देखो आर्टिकल 23 ट्रैफिकिंग बेगार, ठीक है। रिलेटेड डीपीएसपी इज आर्टिकल 43। इसमें क्या दिया हुआ है कि स्टेट विल इंश्योर दैट एवरीबडी, सुन लो पहले, एवरीबडी गेट एडिक्वेट वेजेस। एडिक्वेट वेजेस से कम भी बिकम्स बॉन्डेड लेबर, फाइन, एंड देयर वर्किंग कंडीशन। तो 2343 इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो ये क्या है? स्टेट शुड इंश्योर ऑल वर्कर्स get living wages and decent standard of living. कुछ और एक दो आप फैक्ट्स लिख लेते हैं एज पर चाइल्ड लेबर। लिखो, एज पर इंडियाज कमिटमेंट टू ILO, child labor to be abolished by 2025। अगले साल चाइल्ड लेबर मुक्त भारत होगा, ठीक है, लगता है कहीं भी नहीं। नेक्स्ट है, लिखो SDG गोल 8.7 also commits abolition by 2030। अब है रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। चाइल्ड लेबर को एबॉलिश करना है। SDG गोल नंबर 8.7 में। अब हम क्या करें? पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट। इन्होंने प्रॉब्लम बताई है, देयर इज नो
consistent definition of child labor. Okay. Next, there are contradictory provisions. Under one act, under one act, sexual offenses against children are cognizable offenses. And under other act, non-cognizable offenses. Filhal, I don't see any question possibility in prelims other than fundamental rights and DPSPs which are related. ठीक है.